when I moved to Hong Kong, my first 2 weeks in Hong Kong were disastrous almost. For example, if my portfolio has both Coca-Cola and Pepsi, अब अगर Hmm. लोगों ने जो है वो कोका कोला ज्यादा पीना शुरू कर दी तो कोका कोला का स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब कोक ज्यादा पीना शुरू कर दी तो पेप्सी इसका मतलब कम पीना शुरू कर दी. तो दैट मीन्स दैट इफ आई ओनली हैव कोक इन माई स्टॉक आई बेनिफिट, इफ आई ओनली हैव पेप्सी इन माई स्टॉक आई लूज, बट इफ आई हैव बोथ then it neutralizes. So my risk is neutralized. More than your technical skills, the world now needs soft skills because Definitely. टेक्निकल स्किल्स जो है वो आपकी ट्रेन कर सकते हो आप. दैट इज समथिंग दैट कैन बी built by just studying a course, but soft skills is not something that can be built by studying a course. Like, I can teach you how to code, but I can't teach you how to work in a team. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट हमजा कादिर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेक मुकालमा। आज मैं इंटरव्यू करता हूं फौज राजन को। नाउ फौज इज ए थर्ड ईयर स्टूडेंट एट सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग स्टडिंग डेटा साइंस एंड फाइनेंस। He's also a teaching enthusiast and a quant intern. Now we get to talk about his experience as an international student living in Hong Kong, किस type के problems उनसे face हुए, कैसे उन्हें overcome किया. He also gives his incredible insights on how data science and AI are applied to finance. इसके अलावा जो हमारे beginners watch कर रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो investments में या data science में start करना चाहते हैं to grow their money, तो उनके लिए Foz gives some really valuable advice, so make sure to stick till the end. And as always, अगर आप Foz को contact करना चाहते हैं, then I'll be leaving his contact details in the description down below. Let me know whether or not you enjoy this episode. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी specific guest को interview करूं, then do let me know and enjoy the episode. Welcome to the show, Foz. Thank you so much. आपने आज के interview के लिए time निकाला. I really appreciated it. So before we get into the main conversation, जो viewers हमारे आपको नहीं जानते, उनके लिए do you mind giving a brief introduction of yourself? Where are you from? आपका background क्या है? Where are you studying and what are you currently doing right now? Sure. So as he introduced, मेरा नाम फौज है. You might see on the screen it's written as Rajan. Fauz Rajan is my surname, but यहाँ पे हम surname पहले लिखते हैं. But anyway, so I'm Fauz. मैं originally I'm from Karachi. Feeder College से A levels किया था मैंने, and then I moved to Hong Kong for studies. So I'm currently studying at City University of Hong Kong. और मेरे मेरी डबल डिग्री है, with a major in data science and finance and a minor in economics. So that's what I'm currently doing. And then उसके बाद फिर जो है वो I keep working on internships and such. And so I'm very invested in sort of the intersection of how data science and finance work together, but also how, so this might sound very different to what I'm focusing on, but I also enjoy teaching. So I am also a teacher on the side. I conduct sessions on intercultural competencies और जो है वो coding instructions और इस तरह की चीजें. Yes. Right, so आप काफी different type of experiences में interested हैं, which is a good thing, which is a really good thing. ऐसा होना चाहिए. Uh, so what was the journey like to City University Hong Kong? Like Hmm. what were some prominent memories या फिर कोई आपके interesting experiences जो आपको अभी भी like they're really valuable in shaping who you are today? Hmm. Journey to CityU was quite interesting. The way I chose this degree itself was quite interesting. Mostly because initially the idea was कि मुझे जो है वो math पढ़ना था. तो I was invested in a pure math degree. मैंने जो है वो जब UK की applications भी भरी थी, for example, my whole personal statement was about math. And in that personal statement, I went on a whole rant about कि math is such a beautiful subject and people treat it as though it's malicious. It's out to get you. Math जो है गला दबा देगा मेरा. So I was like, it's not like that, but we're trained, like it's built into our system like that क्योंकि we're always taught to treat math as to like give exam. तो हमें सवाल सॉल्व करना सिखाया जाता है, हमें मैथ पढ़ाई नहीं जाती. That's the problem, right? So my whole idea was that.
बट देन आफ्टर हाफ द एप्लीकेशन सीजन वाज ओवर, तो मैंने आधी जगहों पे प्योर मैथ्स के लिए अप्लाई कर दिया था डिग्रियों के लिए। आई एक्चुअली रियलाइज कि नहीं यार, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करनी है, मुझे आगे की जॉब का भी तो सोचना है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार विथ मैथ, आई रियलाइज इफ विथ अ प्योर मैथ डिग्री, आई रियलाइज के आई हैड माई ऑप्शंस वर फेयरली लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ इट मोस्टली लेड इन टू एकेडेमिया। और मुझे ए लेवल्स की पढ़ाई में A2 में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं है। तो मतलब मैं एकेडेमिया में नहीं जा सकता, बैचलर्स के बाद मेरी बस हो जानी है। तो अ, उस वजह से फिर मुझे आइडिया आया कि अच्छा यार, कंप्यूटर साइंस इज ऑन द राइज, एंड आई हैड कंप्यूटर साइंस इन बोथ O एंड A लेवल्स। तो मैंने कहा यार, आई एम गुड एट इट, आई एम नॉट इन लव विद इट, लाइक प्रोग्रामिंग, देयर इज नो स्पार्क इन माई आई व्हेन आई प्रोग्राम समथिंग। सो आई एम नॉट इन लव विद इट बट आई एम गुड एट इट। एस्टर आया था मेरा दोनों O A लेवल्स में CS में, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं ये, राइट। सो आई वाज लाइक ओके, वेयर इज द इंटरसेक्शन, लाइक व्हाट इज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द मैथ एंड द CS? And then that's the reason I decided on going into data science. One of the major motivating factors for me going into data science was फर्दर स्टेटिस्टिक्स। फर्दर मैथ्स में जो स्टेटिस्टिक्स का मॉड्यूल था वो मुझे इतना पसंद आया था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, स्टेटिस्टिक्स इज सच अ पावरफुल टूल कि क्या नहीं कर सकते आप उससे। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन डेटा साइंस। सो व्हेन आई इनिशियली अप्लाइड, आई अप्लाइड फॉर डेटा साइंस एंड आई गॉट इन। आई स्टार्टेड स्टडीइंग डेटा साइंस। एक सेमेस्टर मैंने डेटा साइंस पढ़ा होगा, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, कितनी भी मैथ इन्वॉल्व हो। मैं नहीं अपने आप को इमेजिन कर सकता सारी जिंदगी एक कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ कोड लिख रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। अब मैंने जो है वो A लेवल्स में इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ी थी। तो और आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट क्लास, सर अली अनवरज़ादा मेरे टीचर थे। और वो जो है वो इतनी मोहब्बत से इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे कि आई आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। AS, आई enjoyed economics a lot. A2 में आई was preparing for साइनोवा। एंड जो है वो साइनोवा का होता ये था कि हम जो है सारे जो प्रेसिडेंट थे, हम लोग सारे रात को 3 3 4 4 बजे तक जूम पे बैठ के चीजें फाइनल कर रहे होते थे। एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स। एंड सर अली की क्लास होती थी सुबह 9 बजे, और अब मुझे जो है उससे पहले सर रॉक की क्लास होती थी मेरी 8 बजे। तो इतनी नींद आ रही होती थी उन क्लासेस में। सर रॉक की क्लास में तो सो नहीं सकते थे, सर रॉक को नाम पता था, वो जो है वो चीख के जगा देते थे। तो उस क्लास में तो सो नहीं सकते थे। सर अली की क्लास में मैं सो जाता था, और सर अली मुझे कहते थे अच्छा मुझे पता है तुम लोग काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, सो जाओ, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो सर अली was chill about it, right? And so I slept through most of A2 economics, and that was where the problem was. ग्रेड आ गया एंड में, लेकिन मैंने A2 इकोनॉमिक्स पढ़ा ऐसे कि सर अली ने जो है अपना ऑल्ट अकेडमी का अकाउंट का एक्सेस दे दिया था। तो उस पर जो सारी वीडियोस थी छोटी 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 कॉन्सेप्ट वाली, वो पढ़ के सवाल सॉल्व करना सीख लिया था मैंने। A2 में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी मैंने। यूनिवर्सिटी आके मैंने जो है वो अपने पहले साल में एक इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स कोर्स लिया। मैंने कहा यार A लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, कितना ही मुश्किल होगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, क्या ही होगा इसमें, आ जाएगा ग्रेड। ले लिया वो कोर्स मैंने। शुरू के 5 हफ्ते तो इतने चिल थे, उसके बाद फिर असल इकोनॉमिक्स आई, लेकिन उसमें बड़ा मजा आया मुझे। मतलब जो हमारा प्रोफेसर था, ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ माय बेस्ट प्रोफेसर्स एट यूनिवर्सिटी, ही वाज रियली नाइस अबाउट इट। एंड देन आई टोल्ड हिम कि आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग इकोनॉमिक्स एज माय सेकंड मेजर। एंड ही वाज लाइक, हैव यू स्टडीड फाइनेंस बिफोर? एंड आई वाज लाइक नो। ही इज लाइक, फाइनेंस इज अ मोर lucrative फील्ड देन इकोनॉमिक्स इज। नाउ द प्रॉब्लम इज A लेवल्स में फाइनेंस से कोई एक्सपोजर नहीं है आपका, तो देयर इज नो सब्जेक्ट दैट टीचेस यू फाइनेंस। तो इस वजह से जो है वो उस प्रोफेसर ने मुझे कहा कि यार लुक इनटू इट, आई वुड सजेस्ट लुक इनटू इट। आई वाज लाइक डू यू हैव एनी रिसोर्सेज? ही सजेस्टेड मी अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू वीडियोस, एंड सो आई वेंट एंड लुक थ्रू एंड आई वाज लाइक ओह, दिस एक्चुअली साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो पहले ईयर के दूसरे सेमेस्टर में मैंने एक फाइनेंस का कोर्स लिया, मुझे मजा आया। So after the first year, I added a second major to my program, and then economics became my minor. So that's how I ended up in finance, because it's more of a people profession and more of like a dynamic profession than coding itself is. Like I understand the people who enjoy coding enjoy solving problems, and I understand that. I'm just not into the software side of the problems, and that's why I'm Hmm. like मैं ये कर रहा हूँ।
So that's how I ended up choosing my degree. This was a long story, but there you have it. That's why I'm doing what I'm doing. Right. And is finance an application of economics? या इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता No, they're very different things. Economics is more market overview कि दुनिया चलती कैसे है. तो microeconomics, for example, is के how do firms make their decision, be it कितना कितना आइटम प्रोड्यूस करना है, कितने का बेचना है, हाँ, मार्केटिंग में कितने पैसे लगाने हैं, इस तरह की चीजें इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर अच्छा गवर्नमेंट ने इस चीज में कितने पैसे लगाने हैं, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे, करेंसी कैसे चल रही है. दैट इज इकोनॉमिक्स. एंड देन फाइनेंस इज मोर अबाउट, you could say more about the study of how money makes the world move, in the sense के जो है वो a lot of investing, stocks, bonds, derivatives, and then you can see कि अच्छा finance में then you have capital markets. तो forex markets कैसे change होती हैं, crypto markets कैसे change होती हैं, finance में you can see asset management कैसे. So these huge universities that have, for example, Harvard has the biggest endowment in the world. Endowment is basically a reserve that the universities have. तो वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, मतलब about I think 50 billion. I don't quote me on this, but I think that's the amount. And जो है वो फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं so that that money keeps growing, right? So that means कि आपके जो बैंक अकाउंट में अगर $1,000 अभी हैं, तो अगले साल उस $1,000 की वैल्यू कम होगी as compared to what it is today because inflation, right? है? So economics and finance are very integrated, but they're very different in terms of how they work. मेक सेंस. सो अभी करंटली अगर कोई ए लेवल्स का स्टूडेंट है, दे वांना ट्राई आउट फाइनेंस, ताकि उन्हें थोड़ी उनकी लर्निंग हो कि फाइनेंस क्या होता है, किस तरह काम करता है, एंड दे वांना ट्राई इट आउट एज ए पोटेंशियल फ्यूचर करियर पाथ. लेकिन एज यू नो के ए लेवल्स में फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं होता. सो आर देयर एनी कोर्सेज, बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो यार, बिगिनर फ्रेंडली हो? किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट बुक्स. But if you do wanna read books, there's this author. I think his name is John Hull. He's known as the godfather of finance. He wrote three books. If you read those three books, you know most of what finance is. But beside that, if you just go on YouTube and search finance for dummies, you'll understand that there's a lot of videos that truly explain what finance is about and how it works. So how financial products are structured, how different things that influence finance work, and things like that. Yeah. राइट. और आजकल काफी ज्यादा स्पेशली ऑनलाइन गुरुज ने ये पॉपुलर कर दिया है. फाइनेंस में आप डे ट्रेडिंग करें, 1 घंटा हर रोज काम Oh, करें, $1,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा. ये आई थिंक that बहुत बड़ा is इशू है. that is not okay. There's no magic formula to finance. If there was, एग्जैक्टली. everyone would be rich, right? हम्म. So, and then money would lose all value because everyone would be rich. So, it doesn't work like that. Day trading doesn't work like that. And all of these, uh, I, yeah, without doing your own due diligence, do not trust a guru on the internet being like, oh, जादू से तुम अगले दिन जो है वो दुबई में कोई बिल्डिंग में घर खरीदा हुआ होगा, तुमने नहीं हो सकता है, राइट? तो इट्स नॉट कि मैं अच्छा जादू की छड़ी घुमाऊं और सारे मसले हल हो जाएं मेरे. इट्स a lot of work goes into how analysis is made. So even when, for example, if I invest in a company, I will look at how the company has been performing over the years, how the market looks like, क्या उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो काम वो कंपनी कर रही है, क्या वो अभी करंटली मार्केट में इन है, नहीं है, शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट है, कंपनी कितने डेट में है, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं, कंपनी का रेशो क्या है, how is the company's
प्राइस टू प्रोडक्शन कॉस्ट, इस तरह की चीजें. there's a lot of factors that go into picking something to invest in. And so just copying someone else's trades uh, isn't a guaranteed win. Maybe they're good at it. If they are, they won't help you for free. So, yeah, बिल्कुल। इफ देर गुड एट इट, वो तो फिर जाके पैसे बना रही exactly. होंगी ना वो। Exactly. Like आपके that's साथ what huge क्यों? banks are doing, right? Like investment firms like BlackRock and JP Morgan investment banking, for example, Goldman Sachs. All of these banks, they charge huge amounts of money for the profits they're generating. Hedge funds work on this entire प्रिंसिपल कि अच्छा भाई, आप हमें पैसे दो, हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको जितना प्रॉफिट बना के देंगे उसका 3% या 5% हम रखें, ऐसा. हम्म, राइट। So now coming on to the topic of your experience as an international student at City University Hong Kong. जब आप कराची से आए तो आई एम श्योर कि काफी डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा. Oh, for sure. So what were some challenges that you faced in adapting to the new culture and the new uh, environment? आपने उन्हें किस तरह ओवरकम किया, and what are the pros and cons of studying in Hong Kong? Hmm. Good, good question. The funny thing with me was that when I moved to Hong Kong, my first 2 weeks in Hong Kong were disastrous almost. Mostly because there were a lot of tropical rainstorms going on at the time. So हांगकांग में जो है वो टाइफून्स ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं. एंड देन दे हैव अ टाइफून वार्निंग सिस्टम के लेवल्स हैं टाइफून के. सो टाइफून लेवल 10 इज द हाईएस्ट लेवल टाइफून. एंड रेन स्टॉर्म के सिग्नल्स हैं उनके पास. तो दे हैव थंडर स्टॉर्म, येलो, रेड एंड ब्लैक. सो ब्लैक इज द हाईएस्ट. नाउ माय फर्स्ट वीक इन हांगकांग वाज द ब्लैक रेन स्टॉर्म. एंड देन माय सेकंड वीक इन हांगकांग वाज द टाइफून लेवल 10. तो उसमें होता ये है कि ब्लैक रेन स्टॉर्म और टाइफून लेवल 10 दोनों में जो है वो ऑफिसेज बंद होती हैं, कॉलेजेस बंद होती हैं, एंड यू आर टोल्ड टू स्टे एट होम बिकॉज इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. एंड सो आई वाज ऑलरेडी इन अ न्यू कंट्री. आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, वेयर टू गो, एंड देन आई वाज आल्सो शट इनसाइड. So it was a very like challenging time. And then मजे की बात ये कि टाइफून लेवल 10 जो 2023 में आया था, लास्ट टाइफून लेवल 10 वाज बैक इन 2018. तो 5 साल के बाद टाइफून लेवल 10 आया. आई वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि मेरे पहले 2 हफ्ते में ये हुआ रहा. बट it was also, and these two storms are till date Hong Kong's most destructive storms in all of Hong Kong's history. So it was very Right. interesting to be here at that time. And then for the first 2 weeks, like अब because कराची में रात का खाना भी जो है वो हम 8 बजे खा रहे होते हैं, 9 बजे, 10 बजे, इस तरह वाला खाने का टाइम होता है, राइट. Here dinner time starts at 5:30 or 6, ends at 9, right? So मुझे Hmm. रात को 9 बजे भूख लग रही है, मैं बाहर निकल रहा हूँ और देख रहा हूँ अच्छा सब कुछ तो बंद हो गया, अब क्या करूँ. तो आई वॉज आइदर सर्वाइविंग ऑन ब्रेड, or I was surviving like bread and the cooked food that I had already brought from home, or I was surviving on McDonald's. So that's what was happening there. And uske baad I eventually started adapting, and then I already enjoyed cooking because खाना पकाने का मुझे वैसे ही शौक था जब मैं कराची में था तब से. तो I just after those like 2 weeks, I mean the storms didn't last the whole week. It was more 3 days, 4 days. बट उसके बाद फिर जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गई चीजें तो मैं जाके इंग्रेडिएंट्स खरीदे और फिर पकाना शुरू किया सब. लेकिन it wasn't just the weather, it was also how fast Hong Kong is. So Hong Kong doesn't stop. Like लोग जो है ना वो आपको दिखेंगे हर जगह हमेशा भागने की जल्दी में होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक पाकिस्तान में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो आपको 2 घंटे से कम टाइम नहीं लगता कि आप Hmm. खाओ, आप जाओगे, बैठोगे, बातें करोगे, ऑर्डर करोगे, खाना आएगा, खाना खाओगे, बातें करोगे, फिर घर जाओ. यहाँ पे you're in and out of the restaurant in 20 minutes, 30 minutes. And Hong Kong is known for its notoriously rude uh, customer service, especially in restaurants because they don't have the space, right? So because
there's it's cramped, एंड सो जो है वो आप आओ, आप ऑर्डर करो, आप खाओ और आप जाओ, वो वाला हिसाब है. सो दे सर्व यू फूड वेरी क्विकली अनलेस इट्स लाइक अ पॉश रेस्टोरेंट where you can chill. But generally at very local restaurants, they'll you come in, they're like, क्या खाना है? And then you give your order and they serve it to you and you pay and you leave. ऐसा वाला सिस्टम है. दूसरी एक चीज ये थी कि हांगकांग इज नॉट लाइक कैश. अब मैं जीरो कैश कैरी करता हूँ, वो वाला हिसाब है कि आई डू नॉट कैरी कैश एट ऑल अनलेस आई वेरी मच नीड इट. लाइक अ वेरी लोकल सब्जी मंडी जाना है अगर मुझे, तो मैं कैश लेके जाऊंगा. वरना जो है वो हर चीज कार्ड से पेमेंट होती है. देयर इज दिस वन कार्ड, इट्स कॉल्ड द ऑक्टोपस कार्ड इन हांगकांग, which is like a payment system for everything. So आप ट्रेन में उससे जाते हो, बस में उससे जाते हो, shops में you can pay with that, convenience store you can pay with that, food you can pay with that. So it's like that one card is for everything. वो वाला हिसाब है. तो इस तरह की छोटी मोटी nuances जो है ना, because coming from like a third world country to a more Hmm. like first world ish place, it was challenging, but it was also that Hong Kong also used to be a British colony. So you can draw parallels between how Karachi is and how Hong Kong is, like somewhat. And जो है वो ये था, I was a lot of my friends who came with me, they were very homesick, mostly because अच्छा कि घर से कभी इतना लंबा दूर नहीं रहे और वो वाला सब. For me, I was in the Boy Scouts when I was back in Pakistan. तो इसका मतलब मेरा ये फायदा था कि आई हैड स्टेड अवे फ्रॉम माय फैमिली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, बीइंग लाइक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, फॉर कैंप्स एंड सच. सो इट वाज वेरी लाइक, so I didn't feel the homesickness as much, but it was also good that one advantage was also कि मेरा भाई जो है वो हांगकांग में रहता है. So he graduated Right. 5 years before I did, and like yeah, 5 years before I came here, and so he lives here, and so he was a huge help into me settling into Hong Kong. Yeah, that definitely helps a lot अगर पहले से ही रिलेटिव्स से भी Yeah, या फ्रेंड्स हो तो उनसे फायदा होता है, लेकिन अगर आपकी अपनी फैमिली हो उधर, फैमिली का कोई मेंबर हो तो काफी हेल्प हो जाती है. exactly. डेफिनेटली Yes, एग्री. सो ये काफी कॉमन कंसर्न होता है ऑनलाइन भी, या काफी लोगों से अगर मैं फिजिकली उनके ओपिनियंस लूं कि हांगकांग की यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करते हैं और जो लोकल स्टूडेंट्स है वो लोकल्स के साथ करते हैं. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? that is true to a certain extent. Mostly because you don't speak the language, right? हम्म. तो अगर मैं जो है वो if I go to a like IBA चला जाऊं मैं, और rather let's not take IBA as an example. Let's take more like IOBM or Karachi University or something, right? और अगर मैं जाके वहाँ जो है वो अंग्रेजी में बात करना शुरू हो जाऊंगा, तो less people will hang out with me than if I start talking in Urdu. तो फर्क ये है कि जो है वो there's a language barrier. And so if I, of course, if with a Pakistani I talk in Urdu, they हम्म. will be more comfortable talking to me instead of if I talk to them in English, right? तो राइट. एक चीज सिर्फ वो है कि अच्छा हाँ, यू कैन सी देयर बीइंग ग्रुप्स इन ऑन कैंपस के इंटरनेशनल्स एंड लोकल्स, but a lot of the locals do want to socialize with the internationals, and so I have a lot of local friends, for example. And a lot of locals are very nice about it as well. And of course, I mean, when you're in classes और इस तरह की events और इस तरह की चीजें, university events, तो उसमें एक फायदा ये होता है कि you get to socialize with all kinds of people, right? Because everyone wants to explore. So, for example, my university, they focus very much on internationalization. तो इसका मतलब ये कि अभी टाइम्स हायर एजुकेशन वाली जो रैंकिंग्स हैं, they came out with a new ranking last year of the world's most international universities. So my university is at the top of that list, a world's most international university. Second is Hong Kong University of Science and Technology, HKUST. And uske baad phir UC. I think the third is Cambridge or something. But
जो है वो then so you can see how much of a focus they put on internationalization के for example every year on in my university there is a Pakistan night तो उसमें Hmm. जो है वो हम पाकिस्तानी कल्चर शोकेस कर रहे होते हैं और इस तरह की चीजें then there is a Diwali night for the Indians, there's the Bangladeshi New Year for the Bengalis, there's a Nepali night, there's a Serbian night, there's a Russian night. तो इस तरह की चीजें जो है वो so you can just तो इन इवेंट्स में सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इनवाइटेड होते हैं राइट नॉट जस्ट इंटरनेशनल सो a lot of locals come here they're surprised to learn about your culture as well and जब आप क्लास में ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं इस तरह तो उस वक्त दोस्तियां हो ही जाती हैं वो वाला ऐसा Hmm. Interesting. Uh, और at City University हांगकांग एंड हांगकांग इन जनरल आपके करियर से रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड फाइनेंस आपको किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और उधर ओवरऑल किस टाइप का कल्चर है कंपनीज या स्टार्टअप्स रिलेटेड. okay so good question break it down into two parts first one is what kind of opportunities I have is because I'm studying data science and finance and IT everywhere in the world is in a boom right now and with finance Hong Kong is the financial hub of Asia so the benefit of that is कि जो है वो a lot of major financial institutions like JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, इस तरह की जो Bank of America, ये सारे जो है major investment banks, for example, their Asia headquarters is either in Hong Kong, Singapore, or Shanghai. So Hmm. a lot of times जो है वो for the most part, a lot of these banks, for example, JP has their headquarters in Hong Kong, Asia headquarters in Hong Kong. So if you want to go into bigger investment banks and such, there's that option for you. There's a lot of smaller hedge funds here as well. Um, Hong Kong की Hong Kong का एक फायदा ये है कि the currency is relatively stable, mostly because it's a for someone who has studied economics, I'll use a term. It's called a managed float, which means कि Hong Kong is pegged to the US dollar. तो जिस तरह US के interest rates change होते हैं, Hong Kong के भी change होते हैं. And so the exchange rate between the Hong Kong dollar and the US dollar stays between 7.75 to 7.85. So it doesn't fluctuate much. And so because the Hmm. currency is stable, it's a very good place for investment. And so a lot of the financial institutions stay here. It's also a good place to stash your wealth, uh, especially well, at least it used to be, in real estate, for example, because जब इतना सा लैंड कल्टिवेटेड है सॉरी इतना सारा लैंड ग्रीन है और इतना सा लैंड जो है वो बिल्डिंग्स है तो आपका रियल एस्टेट बहुत महंगा है तो रियल एस्टेट जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना ऑल्सो हेल्प्स because China is a very big and booming market now. So it's the world's second largest economy. So a lot of investors want that access to China, but China gatekeeps their stock market. So that Hmm. means you can enter China's stock market either through signing up in Hong Kong or signing up in Shanghai. तो आप उन दो जगह से ही इन्वेस्ट कर सकते हो इन चाइना एंड सो जो है वो दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई हांगकांग इज सो बिग क्योंकि चाइना का एक्सेस मिल जाता है आपको so that's the kind of opportunities you see. And then the startup culture is really good, mostly because the government promotes startups. So the government जो है वो readily जो है वो seed fundings देती हैं आपको. That means if you want to start something, you want to start a company, here you go, here's the money, present us. हमें अच्छा लगा हम आपको पैसे देंगे, you can start. So it's like the government works as like a venture capitalist. कि हाँ आपको पैसे दे रहे हैं आप Right. शुरू करो अपना बट एक और स्कीम गवर्नमेंट ने ये शुरू की है विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक अप एज वेल इज के जो है वो let's say I have a startup idea and I want to make a startup and I'm really passionate about it and I have one friend who's my co-founder but it's just two people it's going to be slow very slow if I build it तो द गवर्नमेंट ने एक स्कीम ये शुरू की है कि अच्छा एक काम करो आप इंटर्न्स हायर करो इंटर्न्स को जॉब दो उनसे काम करवाओ
पैसे इंटर्न्स के हम देते हैं, सैलरी इंटर्न्स को हम देंगे. So that means the हम्म. government pays the intern. So that means I'm the founder. I don't mind hiring anyone क्योंकि मेरी जेब से पैसे नहीं जा रहे. And then the student also gains some valuable work experience, right? So that means it's a win-win situation, and the government can brand themselves as startup friendly, right? So it's a win-win-win situation there. हम्म. And so that's a scheme that a lot of students take up in the sense कि अच्छा हाँ, it's called the STEM ITC STEM internship scheme, जिसमें STEM programs में जो भी student enrolled है वो इस internship के लिए apply कर सकता है to different companies, different startups. And so that's the scheme I took up last year as well. I was working at a startup last year. तो startup friendliness के regard से ये चीजें. Right. And I think that's an amazing benefit क्योंकि as you said कि इससे startups को भी फायदा होगा, इंटरनेशनली ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी. So before we talk about your work experiences, uh, let's take a step back and understand कि data science finance के साथ कैसे relate करती है. What is the intersection? Hmm. So data science is any decision that you can make based on information that you have, data that you have, right? And now modern portfolio theory is very integrated with how data science works. So that means there's a lot of real-time decision making. And so especially in the field of quantitative finance or algorithmic trading, you can see that there's a lot of very, very instantaneous decision making. छोटे छोटे गैप्स को आप एक्सप्लॉइट करके और आप प्रॉफिट बना सकते हो. कि अच्छा फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने जो है वो दे जस्ट हैड देयर अर्निंग्स रिपोर्ट, और उनकी अर्निंग्स रिपोर्ट काफी अच्छी है, तो बिकॉज एवरीवन लाइक्स द कंपनी दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. Instantaneously, if you put in your money and then everyone starts buying, the stock will go up and you will make money, right? Right. Or if the report is bad, you immediately pull your money out and then the stock falls, so you don't lose as much money. So there's a lot of very quick decision making when it comes, and that's where the algorithms help you. But it's also data has become so much more diverse. Okay, you keep hearing this thing about the four V's of data: volume, variety, veracity, and um, what's the fourth one? I forgot. खैर, हाँ. तो but the idea is कि variety of data जो है वो काफी increase हो गई है, right? And so that means that it's not just कि कंपनी के historical date performance देख रहे हो आप, या कंपनी के fundamentals देख रहे हो आप. अब आप जो है वो social media sentiment भी for example analyze कर रहे हो, तो कि I was recently working on this model जो Twitter से जो है वो बहुत सारी चीजें scrape करता है और चेक करता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं. There's a lot of news articles, news reports, and then there's a lot of also macroeconomic factors. So let's say कि ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, या जो है वो इंटरेस्ट रेट्स किस तरह चल रहे हैं, या जो है वो जंग चल रही है कोई. तो इस तरह की चीजें भी जो है वो ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं. एंड सो a lot बिल्कुल. of that also goes into decision making. And so there's so much data now, there's so many factors that go into picking a stock that जो है वो data science is very helpful in traditional finance. राइट. इंटरेस्टिंग. सो एज यू सेड के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ऑनलाइन मीडिया पे लोग जो हैं कमेंट्री कर रहे होते हैं, अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि स्टॉक क्या करेगा. फॉरेन पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा आजकल ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं. सो अगर डेटा साइंस के बारे में मैं पर्सनली सोचूं तो ये काफ़ी सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग आता है. जैसे कि एल्गोरिदम होती है, फिक्स स्टेप्स होते हैं कि अगर ये होगा तो ये उसका आउटकम होगा, तो हम इस तरह अपनी बाइंग पावर को चेंज करेंगे. तो ये जो एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स होते हैं, हाउ डू एल्गोरिदम्स टेक दैट इनटू अकाउंट? Okay, algorithms are trained in a way to take
these factors into account. So how traditional machine learning would work, or let's say how a neural network would work, is that it would assign weights to a lot of this information, right? कि अच्छा इन्फ्लेशन रेट को आपने ये वेट असाइन करना है, आपने कंपनी फंडामेंटल्स को ये वेट असाइन करना है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नोड्स कनेक्टिंग दैट, right? So that's how that is taken into account. But also, there's a lot of measurements that can help you with this. So, for example, if the for example, how volatile your stock is. कि कल $10 था, अगले दिन $50 हो गया, उसके बाद $5 हो गया. So that's very volatile, right? So कि आप नहीं predict कर सकते, it's very random. So it's known that the stock market is random forest wala system ke it's you cannot predict the stock market. um, but these models help generate a probability for you ke this is the probability that this will happen, this is the probability that this will happen, and so you in the end are the one making an informed decision based on what the probabilities are. But then there are also, like, there are very advanced techniques to be doing this, but a very simple example would be, for example, if my portfolio has both कोका कोला एंड पेप्सी. अब अगर Hmm. लोगों ने जो है वो कोका कोला ज्यादा पीना शुरू कर दी, तो कोका कोला का स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब कोक ज्यादा पीना शुरू कर दी तो पेप्सी इसका मतलब कम पीना शुरू कर दी. तो दैट मीन्स दैट इफ आई ओनली हैव कोक इन माई स्टॉक, I benefit. If I only have Pepsi in my stock, I lose. But if I have both, then it neutralizes. So my risk is neutralized, right? तो Hmm. इस तरह के बहुत सारे जो है वो स्मार्ट एल्गोरिथम्स हैं जो आपको रिस्क कम से कम करने में जो है वो हेल्प करते हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ mathematical concepts that go behind it. So there's a lot of predictions. For example, you can see uh, geometric Brownian motion, for example, use हो सकता है. You're a physics and chemistry student, you would know Brownian motion is Hmm. random. So geometric Brownian motion is a mathematical principle that helps simulate this randomization in stock prices, and then running simulations like Monte Carlo 1,000 times will make you realize that अच्छा ये 1,000 different stock paths हैं that the stock can take, but what is the probability of each one? And that's how it works. Makes sense. So far आपके किस टाइप के वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं इस फील्ड में? Okay, so my first year, I was not working in finance. My first year, I was working in simply data science. So my first year, I worked at a health tech company, which was trying to build models for diabetes patient and IBS patients. And uh, the models were basically trying to improve their health and improve their diet. तो इस तरह का काम था थोड़ा सा. There was a lot of research and a lot of hypotheses and testing them and making pipelines and things like that. Um, Beside that, उसके बाद फिर जो है once after my first year I started getting more into finance. I started um, m- my first finance internship was at this company जो कि जो है वो they had a proprietary data lake and they were trying to make decisions based off of that. So it was algorithmic trading. Uh, and so they hadn't launched their product yet. और जब मैंने join किया था, they were 2 months away from their product launch. And my last day of the internship was 2 days after the product was launched. So I got to see that through, which was very happy moment for me. कि अच्छा हाँ हमने प्रोडक्ट एक्चुअली लॉन्च कर दिया है और इस तरह की चीजें. एंड देन द करंट इंटर्नशिप आई एम वर्किंग ऑन इज that I'm working on quantitative portfolios. So that means I'm working on a lot of machine learning models that can help me with this stock picking and such. So a lot of factors taking into account, a lot of um, deep learning going here. But one of the challenges with this is कि जो है वो a lot of AI is a black box, and so you can't Hmm. really, like, you don't exactly understand कि हो क्या रहा है behind the scenes of these algorithms.
Like you can see कि अच्छा हाँ, for example, if it's a simple machine learning algorithm, say XGBoost or LSTM or something, then it's fine. Then you can understand, you can predict how it works, and you can see the results and be like, अच्छा ये चीज है, ये मसला है, ये. So there are challenges when it comes to doing that as well, especially as a student when you like 2 साल पढ़ाई की है मैंने और मैं ये काम कर रहा हूँ. So there's a lot of learning on the job as well. And thankfully my supervisors have been really nice about it to give me the space to learn and then start work. So that's nice. Right. And in your current position, uh, what are your kind of day-to-day responsibilities like? किस टाइप के आप टूल्स यूज करते हैं एंड ओवरऑल जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं व्हाट इज इट अबाउट? So the tools that I use are primarily either Python or Excel. क्योंकि क्वांटिटेटिव साइड में अगर आपको जाना है तो पाइथन इज अ मस्ट, एंड देन traditional finance uses a lot of Excel, so that goes into it. A lot of financial modeling is done on Excel. तो वो चीज है. My day to day depends on the project I'm working on. So जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 2 महीने हुए हैं मुझे इस इंटर्नशिप पे और आई एम ऑन माई थर्ड प्रोजेक्ट नाउ, सो इट हैज वेरीड. But for example, my first project was a lot of data scraping. And कि अच्छा हम अगर मेरे पास already एक portfolio है, because when I joined my company already had a portfolio of about 3,000 stocks, and this was a world of कि अच्छा पूरी दुनिया से अलग अलग स्टॉक्स हैं और उसका डेटा जमा करना था. और उसका डेटा आई वांटेड एज फार बैक एज पॉसिबल. सो अगर 1950s में भी डेटा है तो आई वांट दैट डेटा एज वेल, but jitna far back possible, right? So that was my first task. I needed to help them. It was a very basic task. I needed to find this data and help them organize it. But राइट. it wasn't just the stock data. कि अच्छा किस पे खुला, what was the open price, what was the close price. It was also अच्छा भाई अगर price change हुई है तो did they issue a stock dividend? Was there a stock split? Something like that. अचानक से अगर $20 थी price और $5 हो गई, so what happened? And so you can see, acha, maybe they split their stock into four parts and then you have a $5 price. So that makes sense. So you need to help like consider those nuances as well. कभी कभी कंपनीज डीलिस्ट हो जाती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल और या नाम चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ट्विटर का नाम एक्स हो गया था, तो हम्म. then you have a new ticker altogether, and so you need to work with that as well. Or companies, sometimes they're public and then they go private suddenly, so those kinds of things. So that was my first project. Worked on that for a few weeks, and then my second project was more of a deep learning project. So I was trying to predict the next day stock price based on the volume in the past few days of trading. And then my current project that I'm working on is a very multi-factor model that predicts 10 days ahead. तो 10 ट्रेडिंग डेज अहेड, इसका मतलब 2 हफ्ते आगे. तो इट हेल्प्स मी डू दैट इन दैट सेंस के there's company fundamentals going in के quarterly revenue क्या है कंपनी का और इस तरह, and then there's also um, a lot of macroeconomic data going in कि अच्छा current interest rates क्या है, federal funds rate क्या है, इस तरह की चीज. राइट. एंड यू प्रीवियसली मेंशन के एआई और मशीन लर्निंग भी यूज होती है क्वांटिटेटिव फाइनेंस में. यू मेंशन के न्यूरल नेटवर्क्स में जैसे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा हैं, हम उन्हें डिफरेंट वेट्स असाइन करते हैं स्टॉक पिकिंग को बेहतर करने के लिए. सो अदर देन दैट एआई और किस तरह यूज हो रही है डेटा साइंस एंड फाइनेंस में? और आप पर्सनली अपनी लर्निंग में या अपनी जॉब में एआई को किस तरह यूज करते हैं? मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूँ, आई हैव AI write all my code. I don't code. Most of my code is vibe अच्छा. coding because AI writes my code. So it's chill. But vibe coding is also a skill that not everyone knows because
You need to be asking the right questions and you need to be understanding what's going on in the code to be like, कि अच्छा हाँ मसला है, मुझे समझ आ गया ये मसला है, and then I tell the AI कि भाई ये मसला है, ठीक करो. So something like that, right? So vibe coding is also a skill, and so when people say, "Oh, AI will replace jobs" and blah blah blah, I'm like, AI will not replace jobs. Like there will be a substitution. That AI will replace some jobs, and then AI will also create some jobs. But one thing is for sure is that AI will replace people who don't replace use AI. So like people who use Exactly. AI versus people who don't use AI, something like that. So बिकॉज अब अगर कोई रॉ कोड लिख रहा होता है ना ऐसे बराबर में बैठ के मेरे, तो मुझे बड़ा वो हो रहा होता है कि अच्छा यार ये बंदा कोड लिख रहा है. लाइक it's very surprising to me now. Like a lot of times, even with like interviews, for example, the finance market in Hong Kong is very competitive. So that means कि अगले समर की जो internships हैं मेरी, जो अगले जून में शुरू होंगी, their applications close in August, so next month. So I have to apply a year in advance for next summer, right? And Hmm. so, for example, since it's that competitive, even in those interview stages, they some companies will give you a coding test, but they also know कि आप चैट जीपीटी से लिखवाओगे कोड. तो बिल्कुल. वो जो है वो आपके कोडिंग टेस्ट को जब आप सबमिट करोगे इतना वेटेज नहीं देंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू तक पहुंचोगे फिर आपको ड्रिल करेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है और क्या हो रहा है. So you should have Hmm. the knowledge of how programming works and how you can code it, but you don't necessarily need to code it yourself. That's that's my 2 cents on it. All right. Interesting. Uh, so is there a lot of coding involved आपकी job में या फिर mostly Yes. you're writing scripts? There is a lot of coding involved, mostly trying to train models. And so there's a lot of data processing also involved. But the one thing is that there's a lot of on the job learning, as I said. क्योंकि for example, if I wanted to scrape data off the web, right? अब मैं डेटा साइंस और फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस्तेमाल करना आता है वो डेटा, और जो है मुझे पता है कि उस डेटा का काम क्या है और कैसे जनरेट हो रहा है, राइट? फाइनेंस हैज टॉट मी ओ क्या है ये डेटा, एंड डेटा साइंस हैज टोल्ड मी हाउ टू यूज दिस डेटा, but no one's told me how to get the data. No one's taught me web scraping, right? Even computer science students don't learn web scraping, right? So that's something that I learned on the job. I learned web scraping on the job. But it's also crazy that, uh, for example, I am also a coding instructor, so I teach coding to 8 to 15 year olds. And so last year, I was teaching this one student who was 12 years old, and I was teaching him how to do web automation using Selenium. And मैं उसको पढ़ाते हुए जो है ना, मुझे जरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा होता था कि यार 12 साल का बच्चा है, मैं क्या कर रहा था 12 साल का जब मैं था, तो राइट. बट इट्स ऑल्सो लाइक दिस इज द फ्यूचर. तो यूल सी कि अच्छा आप अगर एआई को या जो है वो कोडिंग को अर्ली अडेप्ट नहीं करेंगे, तो you will be lost very far behind. And so it's not that AI will replace your job, it's just that this is something that you need to live with. के अब आज की दुनिया में अगर कोई ऐसा है जो फोन नहीं इस्तेमाल करता, तो he is practically not, like doesn't exist if he doesn't have a digital Hmm. footprint, right? So it's essentially like that. If you don't use AI, then you might become obsolete very soon. Right. एंड सो फार आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. कराची से लेके हांगकांग तक आपने इतनी अच्छी तरह अडेप्ट किया. आपने अपना पैशन ढूंढा. अब आप उस पे इतना ज़्यादा काम कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग पॉइंट्स भी हुए होंगे. आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी. सो इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, what would you tell yourself, or what would you do differently based on what you have learned so far? What would I do differently? It's a very difficult question.
हम्म। या अगर एक डिफरेंट तरीके से फ्रेज करें तो आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस देंगे? No, actually, what I would do differently is to just um, I think is to just start exploring earlier. Like, because हमारे दिमाग में जो है ना वो एक सेट पाथ होता है। जब हम स्कूल सिस्टम जिस तरह का हमारा डिजाइन है ना, वो इस तरह के डिजाइन है कि अच्छा आपने नर्सरी पढ़ी, आपने प्राइमरी स्कूल पढ़ी, आपने सेकेंडरी स्कूल पढ़ी, आप कॉलेज गए, आप वहां से यूनिवर्सिटी गए, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, जिंदगी ये है आपकी। लाइक इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड अराउंड हाउ द academia life works. And राइट। at some point, I used to think I could do that. Like, because I was like, I've always been a fan of teaching people. And generally, the teaching profession as a whole is very close to my heart. Mostly because मैं जब स्कूल में था ना तो मुझे ये रियलाइज होता था कि यार बहुत सारे लोग टीचिंग के प्रोफेशन में, स्पेशली इन कराची, आई हैव सीन दिस के a lot of people go into the teaching profession because they can't find anything else. ओ लेवल्स बिल्कुल। एंड बिलो, राइट? कि इंजीनियरिंग पढ़ी है मैंने, जॉब नहीं मिल रही, तो मैं मैथ्स का टीचर बन गया। एंड ए लेवल्स, आई अंडरस्टैंड, a lot of teachers are just there for the money because A levels is a big market. There are very, very few teachers that are actually there for because they genuinely have a passion for teaching, and I was glad to have met a lot of those teachers. But जो है वो um, in that in that particular regard, आई से कि आप जो है वो थोड़ा सा जल्दी अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल एकेडेमिया यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि मैं पीएचडी करके और मैं जो है वो लेक्चरर लग सकता था कहीं, एंड आई कुड टीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बट नाउ यूनिवर्सिटीज हैव most for the most part stopped hiring lecturers, and they only hire researchers which also teach classes on the side. तो वो वाला सिस्टम है कि a lot of the job market is changing, and so you don't, जिस तरह मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था कि मुझे प्योर मैथ की डिग्री नहीं करनी, तो आई थिंक the only advice I would give myself is to start exploring slightly earlier, and to not just explore what you like to study about, but also what niche you would like to pursue. Like, of course, at 16, 17, 18 years old, you're not expected to have all the answers in life. I don't have all the answers in life anyway, but I would just more so थोड़ा सा ट्रेडिशनल राउट को अगर आप चैलेंज कर सकते हो और आप कह सकते हो कि यार मैं थोड़ा सा अपने लिए सोचना चाह रहा हूँ, कि जिस तरह मेरे ए लेवल में सब्जेक्ट थे, मेरे सब्जेक्ट थे मैथ, फर्दर मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। नाउ इज अ वेरी साइंस बैकग्राउंड, एंड देन आई हैड इकोनॉमिक्स। So it was very like a lot of people were like, what is this weird subject combination? But then economics ended up being something that I really loved. So जब मैं ए लेवल्स में था, मैंने अपने पहले 2 महीने 7 सब्जेक्ट पढ़े थे। So that means I had my four initially, and then I was debating between economics, psychology, and sociology. And so I took all 7 classes for 2 months. And then I was like, okay, I finally decide on economics because I feel like economics is something जो दिमाग खोल रहा था मेरा. So I was like, I have a better understanding of the world, how it works when I study economics. And so that was my decision. But A levels was the way I explored myself. Uh, but I feel like more than your technical skills, the world now needs soft skills, because डेफिनेटली। technical skills जो है वो आपकी train कर सकते हो आप, that is something that can be built by just studying the course. But soft skills is not something that can be built by studying the course. Like, I can teach you how to code, but I can't teach you how to work in a team. So a lot of times, like a lot of my past internships have also gotten me there in the sense that I just knew how to talk. I just knew how to जो है वो जेल इन विद अ टीम, एंड जो है मतलब इंटरव्यू में मस्तियां कर रहा हूँ मैं, अगले बंदे से बातें कर रहा हूँ मैं, राइट? लाइक माय लास्ट इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल द इंटर्नशिप दैट आई डिड अर्लियर दिस ईयर इन द कंपनी दैट आई मेंशनड पहले, जो कि प्रोप्राइटरी लेक से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे थे।
उस कंपनी के इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू मेरा आधा घंटा चला था, और आधे घंटे के इंटरव्यू में फॉर 20 minutes आई टॉक्ड अबाउट जस्ट डायबिटीज. It was अच्छा। a finance internship, and I talked about diabetes in that interview, mostly because वो मुझसे मेरा experience पूछ रहा था. और experience में मैंने जब उसको वो वाली internship का बताया, तो he was so interested, he started asking me questions about diabetes and what did I discover in that research that I did, and so all of those things. So it's not necessarily just about how much you know, it's about how you present it. If the other person thinks you know, even if you don't, you're okay. तो बातें करना जो है ना, जो स्किल है, वो बहुत जरूरी है, आई फील लाइक. सो Yeah, आई या सो definitely एनी एडवाइस agree. दैट आई वुड गिव इज के just learn how to talk and how to sell yourself. That's the biggest skill. Yeah, definitely. So for an average person जिन्होंने डेटा साइंस नहीं पढ़ी, जिन्हें फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, Mhm. और वो स्टूडेंट्स हैं ए लेवल्स यूनिवर्सिटी, ओ लेवल्स, एफएससी, मैट्रिक, आईबी में, बट दे वाना ग्रो देयर मनी, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग होती है ओवर टाइम, जितना आप जल्दी स्टार्ट करो तो 20-30 सालों में काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो हो जाती है अमाउंट, आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो। तो अगर वो जानना चाहते, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर समझना चाहते हैं, ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो डेटा साइंस और, तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हें फाइनेंस के बारे में क्या सीखना चाहिए जस्ट टू गेट स्टार्टेड, और उसमें डू यू थिंक डेटा साइंस इज ऑल्सो समथिंग इम्पोर्टेंट दैट दे शुड ट्राई टू लर्न एट दैट पॉइंट? I feel like finance, basic finance, especially personal finance, is something that everyone should know. Um, because if I just let my money sit in my bank account, then it's just going to lose value, right? So um, it doesn't matter how much I make if the money is just losing value sitting in my bank account. So unless I'm making my money work for me, it's not worth it. तो तो एक बात ये है कि smart investments is, first thing you need to know is what investment products are out there, right? A lot of banks offer, for example, time deposits, bonds. Um, उसके बाद फिर there are things that you can invest in as like a very beginners, like uh, a very beginner investment would be something like gold, right? Um, Especially because when you're starting out, you don't really know how to pick companies. Even I don't yet know how to pick companies properly. I've made investments, I've lost some money, I've gained some money, but investment is about that risk taking. But you first need to understand what your risk boundary is, how much you can stand to lose, and then analyze how risky an investment is that you're trying to make. But first thing you need to know is how products are structured. तो आप पहले ये देखो कि अच्छा आपका बैंक, फॉर एग्जांपल, जस्ट स्टार्ट विथ योर लोकल बैंक जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो. चेक करो वो प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑफर करते हैं, राइट? what bonds, what time deposits options, what high yield savings account है अगर उनमें कोई, तो इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करो आप. और देन यू रियलाइज कि अच्छा हाँ, somewhat return on your money you're making. And then as you start learning about that, start growing on from there. With data science, I feel like data science is more of uh, I for lack of a better word, I'll say niche. But जो है वो, data science is something that you should do if you're passionate about it. But it doesn't have to be about money. Like data science doesn't have to be about money. I'm not saying कि data science or finance करो. I'm saying data science, do it for your pleasure. So, um, data science in that sense के अगर आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप जो है वो टीम्स का हिस्टोरिकल डेटा निकाल के और आप उस पे एनालिसिस एक रन कर सकते हो कि अच्छा हाँ भाई कौन सी क्रिकेट टीम जीतेगी, राइट? यू कैन एक्चुअली फिगर आउट प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन दैट, राइट? अगर आपको ओलंपिक्स पसंद है, तो आप हिस्टोरिकल मेडल्स और ग्रोथ रेट और इस तरह की चीजें चेक करके और आप देख सकते हो अगले ओलंपिक्स में कौन सी
कंट्री जीतेगी, राइट? डेटा साइंस के साथ आप इस तरह की चीजें कर सकते हो. लाइक वन ऑफ माय फर्स्ट few projects in data science that I had. This is a project that I started building. I never really ended up finishing it, but it was a sentiment analysis project which helped me analyze my chats with my friends. It was a Hmm. very funny project idea in the sense that if I'm not picking up on social cues, my software should pick up on social clues and tell me if that other person is dry texting me and मुझे कटाने की कोशिश कर रहा है. That was the idea behind the project. It would just pick up on words and figure it out. Right. I never ended up finishing it, but like इतना फुजूल सा भी project हो सकता है आपका, just something that you're interested in, just something that you would find value in. That's how you can start if you want. नाइस। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज कि हमने 1 आवर मार्क क्रॉस कर लिया है। आई होप दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू। All good. ओके। सो बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, अगर हम फ्यूचर में देखें, what are some skills that you think are going to be extremely important, not just related to data science and finance, बल्कि ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, जैसे आपने कहा था सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, अभी भी हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंजेस आ रही हैं, एआई एडवांस हो रहा है, लोग एलएलएम्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बेसिकली फ्यूचर प्रूफ किस तरह कर सकते हैं? Hmm. Number one, start using AI. Like a lot of people sometimes get intimidated by the amount of information that is out there about AI and things like that. The best way to learn about it is to not read about it, is just start using it. Even even basic models like Google का Gemini है, for example. गूगल का जेमिनाई अगर आप उसको कोई रिसर्च पेपर दो, फॉर एग्जांपल 100 पेज का रिसर्च पेपर है, मैंने जेमिनाई को दिया एंड आई टेल इट टू जनरेट अ समरी, इट कैन मेक इट अ पॉडकास्ट फॉर मी. It can turn it into a podcast. I can listen to it and then I can ask it questions in the podcast like a guest. Right. So like it's a very marvelous tool when you just start using it. So I feel like first step you need to take is to start building that awareness of AI, its capabilities and things like that. And then you need to start um, developing your soft skills in the sense that you need to start learning how to work with people, how to listen to people, but also to make your voice heard. Because अगर आप हमेशा सुनते रहोगे तो मसला एक फिर ये होता है कि a lot of people are very dominating. Like most people in that sense prefer how your like अगर मैं हूँ, I am very much like that. I very much take other people's opinions into account, but I'm very much like, acha, if I'm thinking this way is the best, then I will very likely go with that way. So, if I'm leading, that's good. But if I'm following, that's not good because then I will not Hmm. be able to work in a team. So it needs to be a balance of both in that regard. But you also need to learn how to socialize. तो अभी जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ उससे लग ये नहीं रहा होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं हूँ. If अच्छा। you check my MBTI, I'm an introvert. But I'm an introvert who has realized that socializing is a life skill. हम्म। So that is something that you just need to do to survive. And so I've learned कि अच्छा हाँ भाई ये तो करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस this is what I'm gonna do. And so that is also something that, especially in networking is also in the sense very important कि जो है a lot of times, because for example एक कंपनी है जिसमें 1,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं and only 5 spaces, right? So if you know someone at the company, even if they cannot get you a job, they can at least progress you to the initial through the initial screening stage. So they can help you land an interview at least. Then it's your job from there onward to impress the interviewer how you see fit. लेकिन जो है वो networking is very important in the sense that not just knowing people कि मैं किसी बैंक के प्रेसिडेंट को जानता हूँ उसका कोई फायदा नहीं. You need to be valuable to the other person as well for them to think कि अच्छा हाँ this person is worth me helping out.
So there needs to be value on both sides. And so you need to figure out what your own worth is. अगर मैं कहूंगा कि यार मैं तो सिर्फ सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या जॉब पे जाऊंगा, तो कोई जॉब नहीं देगा मुझे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि यार मुझे ये आता है और मैं ये सीखना चाहता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, तो कोई क्यों नहीं जॉब देगा मुझे, राइट? तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। ये आपने काफी इम्पोर्टेंट बात की थी कि हम ना लेबल्स बना लेते हैं लोगों के लिए अपने लिए, कि भाई ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, और मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ, मैं तो हूँ इंट्रोवर्ट। लेकिन आधी प्रॉब्लम्स तो हमारे दिमाग में ही होती हैं कि वंस वी एक्चुअली गो आउट, हम सोशलाइज करें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, once we put ourselves out of the comfort zone, then we start to realize कि हम ग्रो कर सकते हैं, और ये जो एग्जैक्टली। लेबल्स होते हैं ये इतने, they don't hold any actual value. सो पर्सनली आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं in the next 2 to 5 years, like where do you see yourself? Hmm. Well, I don't see myself moving out of Hong Kong anytime soon. That's something that's set, at least for now in my head. Lekin in the next 2 to 5 years, um, I'm still debating as to what exact direction I want to go into with my field. Do I really want to go into quant investment or quant research or traditional asset management or anything like that, maybe even a hedge fund? Or if I want to forget all of that altogether and I want to go into teaching, right? So Hmm. it's very like, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि मैं 2 साल बाद जब ग्रेजुएट होऊंगा उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन that is the general direction that I know I want to go in. It's either in somewhere in finance or in the teaching profession. Yes. Interesting. uh, and off camera you said कि हांगकांग में ऐसे कमाना is a lot easier than in other countries. और पीआर का भी सिस्टम काफी सिंपलर Hmm. है एज कम्पेयर टू यूके या यूएस को। हम देखें उधर लोग सालों से दे आर स्टक बेसिकली। सो could you explain that? Hmm. So, for example, okay, a lot of people overlook Hong Kong both as a study and a work destination because I don't know what stigma there is in the people's brains. Uh, but जो है वो, for example, like 5 or 6 of Hong Kong universities are in the top 100 in the world, right? So if you're sleeping on them, that's on you. If you go to another university that's like, oh, यूएस में है लेकिन 400 समथिंग रैंकिंग है उस यूनिवर्सिटी की, then that's on you. But also the sense ke why I say it's easy to make money is that Hong Kong is very much uh, has a very high cost of living. So everything's very expensive. Like even if, for example, China is right across the border for me. I have a visa. I can go to China. कुछ मैं अगर अभी यूनिवर्सिटी से निकलूं तो I can get to Shenzhen in 40 minutes. Right. So it's very close by, and prices are 4 times as less there as compared to Hong Kong. Like um, पाकिस्तान में एक नॉर्मल मील का कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 300 to 500 rupees होगा, which is 10 to 15 Hong Kong dollars. But in Hong Kong, the price of a normal meal is anywhere from 50 to 70 Hong Kong dollars. That means you Hmm. can see it's 5 times as much, बिल्कुल। right? So you can see that the cost of living is very high, but then the compensation is also according. कि जो है जॉब कर रहा हूं मैं तो मुझे पैसे भी उसी लिहाज से मिल रहे हैं जितना जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है. And so people are also willing to spend on those um, things. Okay, for example, tutors get paid very highly, right? So tutors, for example, private tutoring,
पाकिस्तान में ट्यूशन देना, मैं किसी के घर जाके भी पढ़ा लूँ तो मैं जो है वो इतने कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूँ तो मैं $300 बना रहा हूँ। राइट। विच 300 कुछ 9,500 या इस तरह बनता है 1 घंटे के। हम्म। तो यू सी, इट्स in that regard, people know what experience is to value and skills that are valued in the sense that, oh, a hairdresser will make a lot of money. Um, what else? A chef will make a lot of money, and so it's fair compensation, and that's why I say it's easy to make money. It's easy to find ways. It's side hustles are easy, and so that's why you can make money. राइट एंड पीआर, व्हाट्स हाँ, द पीआर। या PR का ये है कि you stay in Hong Kong for 7 years and then you get your PR. So you're a permanent resident in that regard. And then once you get your PR, you can always apply for a passport. Um, so if you come to Hong Kong as a student, तो 4 साल आपकी पढ़ाई होती है और फिर 3 साल आपने जॉब करनी होती है. Now Hong Kong has a really good initiative in that regard कि work visa जो है आपका, you after your student visa expires after your 4 years, anyone that has completed a degree in Hong Kong automatically gets a 2 year extension. So you don't राइट necessarily need to have a job to get your work visa. जॉब नहीं भी लगी आपको तो आपकी 2 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी. And so you have that time to be able to find a job. And then after those 2 years, you just need to have a work visa for just one more year before you can apply for permanent residence. एंड हम्म उसके बाद फिर जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जनरली टेक्स 1 ईयर, 1.5 ईयर, समथिंग लाइक दैट फॉर पाकिस्तानी. तो इट्स अ इट्स अ गुड डील आई वुड से. या डेफिनेटली सो बस यही कंडीशन है 60 सालों की PR के लिए यही कंडीशन है. पासपोर्ट के लिए थोड़ी सी और चीजें हैं, लेकिन आई मीन वंस यू गेट टू दैट देन यू कैन फिगर दैट आउट. राइट राइट सो थैंक यू सो मच फॉज वंस अगेन दिस वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन मेरे दिमाग में जो इमेज बना हुआ था हांगकांग का इट वाज रियली वेग काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस थे जो थैंकफुली आपने क्लियर कर दिए आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी वैल्यूएबल चीजें उन्होंने सीखी होंगी इस इंटरव्यू से सो बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं एडवाइस के लिए या कोई क्वेश्चंस आपसे पूछने हो तो वो किस तरह कर सकते हैं Oh, for sure. Text me on LinkedIn, Instagram, anything. I don't mind. Yeah. ओके फिर वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा Yeah, व्यूअर्स for के लिए sure. थैंक यू सो मच वंस अगेन बहुत मजा आया एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स